Assalamu alaikum. I welcome all the participants in our today's seminar. As you know, that the seminar series is part of our DAS event calendar, and it will be carried out on every Thursday at 2 p.m. Today, the topic of our seminar is calculation and validation of actual evapotranspiration from satellite-derived indices with observed data in delineated agroclimatic zones of Punjab using remote sensing and GIS techniques. And this is presented by Dr. Muhammad Amin, Assistant Professor, Institute of Geoinformation and Earth Observation. I hope this scientific talk will provide an opportunity to get an in-depth knowledge on the topic. After the presentation, there will be a question-answer session, and if you have any question, you can ask your question during this time. So over to Dr. Amin for our today's presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dr. Farooq Saab, Dr. Advanced Study. As Dr. Farooq Saab mentions, today's my topic for this lecture is calculation and validation of actual evapotranspiration from satellite-derived indices with observed data and delineated agroclimatic zone of Punjab using multispectral remote sensing and GIS technique. Basically, we conduct research last year, 4 years of agro-ecological zone in Punjab, and I chose this topic, particularly this topic, from my main research of agro-ecological zone. So, because this is a very important topic, we built a novel methodology in this topic, calculation and validation of actual evapotranspiration of satellite-derived indices with other observed data. Briefly, some introduction of the such agriculture is definitely, mostly people know that agriculture is our largest sector, contributing sector in Pakistan, like 23% in our GDP. Almost it provides 22% of the total employment related in agriculture industry or farming community. The total laborious work or employment work is about 40 to 42% in latest survey. Contribution of agriculture continuously decreasing from 27 to 9% from 1982 to till date. Due to semi-urbanization or expansion of the big cities, our agriculture land decrease day by day. Also, employment of the agriculture is decreasing from since 1985. Also, changing climate has accelerated the vulnerability risks. This is a major vulnerable risk of the agriculture sectors due to increasing in temperature, changing in rainfall. For the export of the to support this study, I am witness in 2022. Those are biased. Our major crop is wheat. Definitely, wheat crises are occurring from last 2 to 3 years in our country. Due to increase in temperature or sudden changes in climate in this season, particularly last season, our wheat crop harvest almost 15 to 20 days before their crop cycle. Likely in Punjab, when we talk about Punjab, our wheat harvesting season start from mid or last week of the April, and almost harvesting complete in the month of May. But in this season, over 95% of wheat crop, like in Sindh or in southern Punjab or in middle Punjab, almost harvested in mid of April. So 2 to 3 weeks gap between the crop cycle. Due to this is the indication of pure climate change or climate change vulnerability in this area, because these areas are our food basket, like southern to middle Punjab. Also, climate is the prime factor that exerts the major influence on vegetation,
soil health and water resources. There is an explicit change in the weather pattern in Pakistan, definitely. Mean temperature has been increasing up to 0.6 degrees Celsius in last century. Also, our day-night temperature is more fluctuate. This is the very clear indication in our last research. Climate change studies highlighted the needs of new site-specific cropping system, development of the crop suitability maps and agroecological zones. This is a very important discussion because we are facing 5 major countries due to climate change, but unfortunately, we are still stagnant our cropping system. Those we are following from last 5 to 6 decades. Now that time has to be changed, climate change occurred, but our cropping system is still stagnant. This is the very key component. At least we have need to shift the cropping cycles. Division of the land resources with a unique combination of topography, soil, climatic characteristics represent the potential constant specific area. Because we are not grown where what we grown. Because every crop depends upon the suitability of the crop land, soil type, climatic zone. But unfortunately, we cannot bother the capability of the soil climate suit for the different crops. We can grow crops on a traditional way, and we are still stagnant on our cropping cycle or cropping system. This is the broader objective of our study. Those were conducted in last year, 4 year. Our major objective was to delineate agroclimatic regions and estimate length of growing period based on various climatic parameters. In this objective, we delineate agroclimatic zones and estimate the length of growing periods in particular zones. And the second objective is that to delineate agro-ecological zone based on the edaphic and climatic factors. Edaphic factors like soil type and other parameters which are related to crops. Because some students or researchers know about the in last time our agroecological zone was developed in 1980 with the help of some research organization like PRC and others. And after that, this sector was the empty and no updated maps are available of agroecological zone. In this study, we delineate agroecological zone on the basis of their certain parameter. Also, we use the latest tools, technology, and parameter and data analysis, data mining in this research. Our third objective was to develop crop-specific land suitability maps based on the crop norms, land characteristics, and crop economic indicators. In this objective, we developed the particular location-based maps for crop suitability, where you can grow what type of crop. Such kind of data sets we are used and analysis performed in our research. In this research, like our climate data and climate data, we use minimum temperature, maximum temperature, wind speed, sunshine hour, humidity, and we calculate evapotranspiration, edaphic variable in soil, waters, and we develop the different layers for delineation of agroclimatic zones and agroecological zone. And we perform a different analysis in our GS environment, as we are mentioned in our right side. Some calculation factors are involved due to priority of the layers. What type of layer you can
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हमारी तरफ लाइट ऑफ हो गई है तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था। ठीक हो गया सर, ठीक है कंटिन्यू करें। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, and we perform different analysis in our GS environment, in a remote sensing environment, to delineation of agroclimatic and agro-ecological zoning, and as well as for the suitability of the cropland in Punjab. This is our main methodology. We basically, our methodology was consist of in our four segment or parts. First is the agro-climatic zone. In this, we use climatic data. In climatic data, we use 5 major parameter: maximum temperature, minimum temperature, wind speed, sunshine, and humidity. And on the basis of these parameters, we calculated evapotranspiration. And then we calculate the moisture index. In moisture index, we include precipitation. After that, we delineated agroclimatic zones. After that, the part B, we delineate agro-ecological zone. We perform a weighted overlay analysis on the data sets of agroclimatic zone, and then we use a soil sampling unit, soil type. For soil type, we got data of almost 300K samples of from Punjab, location-based small. These samples were collected in 2016. This latest data was used for delineation of agro-ecological zones. After that, we incorporate all the land characteristics. Those are needed for the crop suitability, like groundwater depth, groundwater quality, soil EC, pH, organic matter, P and K. Also, we use a surface water inflow and groundwater availability, and we use detailed elevation model for assessment of the land characteristics. For this, we use a Python-based for delineation of crops, killing these all data sets on 100 by 100 grid cells. And after that, we delineate our maps of crop suitability mapping. Almost we delineated 56 maps of different crop layer like wheat, barley, maize, sugarcane. We delineate 56 crops in this study. After that, we use zones. If I suggest, for example, X crop suitable for in Potuvar, that's not mean this crop is viable for Potuvar, because when we analyze on this whether net return of the crop is sufficient for this zone, then we endorse this crop in particular areas. Out of that data required for agroecological zoning, meteorological data, soil data, water availability, crop norms. When we are working on agroeconomic zoning, we develop the crop norms. What is crop norm? Crop norm is what kind of parameter, what minimum temperature, maximum temperature are needed for the crop, and
what is the groundwater condition, surface water requirement. We develop a performance-based, expert-based survey to develop all the crop norms in different regions. Like South Punjab, we basically divided our study area into 3 parts: Southern Punjab, Middle Punjab, and Upper Punjab, like Pothwar areas. These data sets, meteorological stations were used in our study area for gathering of data, climate data. We use 21 weather stations in Punjab in all the 36 districts. We use daily data, then we calculate on a monthly basis and perform such kind of analysis in these areas. This is our main methodology for our today's topic, actual evapotranspiration. First, basically we perform 2 parallel works. One is on a satellite-based product, and other is perform on the climatic data. We got data from different PMD weather stations. Those were installed in different areas of the Punjab. In this area, the left side, multi-temporal satellite data, we got a different satellite, different time series satellite data, and perform pre-processing like cloud filtering and other image processing technique to clean up the data. Then we calculate NDVI, normalize different vegetation. Just where the greenness of the areas are crops, are bushes, and different. And then we perform NDVI fraction. This is a very interesting thing, NDVI fraction, because this point is the novel of the study, NDVI fraction. On the right side, we perform climatic data, and we calculate evapotranspiration on the basis of Penman Mountain method. This is the FAO method for the calculation of potential of evapotranspiration. After that, we correlate between those data set of satellite-based product and climatic data. Those were collected from the PMD weather stations. And we calculated both potential evapotranspiration as well as actual evapotranspiration. Then we draw a correlation between those data sets. NDVI, these are the 2 main objectives of in this research: delineation of agroclimatic zone and calculation and validation of actual evapotranspiration for the actual and the satellite data. And this is the, I think, very novel approach. इधर हम में से मोस्टली लोग जो बैठे होंगे वो उनको पता होगा क्रॉप कोफिशिएंट। क्रॉप कोफिशिएंट जो है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल हमारे पास फिगर है कि वो क्रॉप की स्टेज वाइज चीजों, क्रॉप जो स्टेज उसमें वो एक फैक्टर है कि इस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। लाइसीमीटर डिवाइस होती है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं ऑन ग्राउंड इंस्टॉल करके कि इस प्लांट की, लेट्स से वी हैव अ कॉटन प्लांट, तो वो हर स्टेज पे बताएगा कि इस टाइम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेज वाइज हर 15 डेज के बाद स्टेज वाइज वो कैलकुलेट लिटरेचर से मिलती है कि 15 डेज के बाद आपको क्रॉप कोफिशिएंट मिलता है। उसकी बेस पे आप क्रॉप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई आप पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन, उससे आप वाटर की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्लांट की। तो ये आपको लिटरेचर से मिलती है, और लिटरेचर से भी जब मिलती है तो आपके पास बड़ा एक उसमें जो ऑप्शन है दैट इज वेरी लिमिटेड, बिकॉज इन 2005 PCRWR was conducted this research with the help of lysimeter। उन्होंने पंजाब की एक क्रॉप कोफिशिएंट डिजाइन की, इमी ने की है 2006 के अंदर। लेकिन आपको लेटेस्ट जो है ना, क्योंकि वो दैट इज अ वेरी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट, वो आपको मिलती नहीं है इतनी, आपको उसी चीज पे करना पड़ता है जो आपके पास लिटरेचर में अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने, ठीक है, हम है कि हम ठीक, हमारे पास वो लिटरेचर में पड़ी हुई है, लेकिन रिमोट सेंसिंग GIS में क्या रोल प्ले कर सकती है
एक जो क्रॉप कोफिशिएंट डेवलप करने पे। क्रॉप कोफिशिएंट बेसिकली ये है कि आपकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है विद द टाइम ऑफ द क्रॉप साइकिल। जैसे बल्कि तो मेरी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मेरी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर एक बंदा उसकी जिसामत है उसके हिसाब से उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसी तरह क्रॉप की स्टेज वाइज जो है वो जो वाटर रिक्वायरमेंट है और उसका जो क्रॉप कोफिशिएंट है वो होता है। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने ये एक फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन एक हमने एक्वेशन डिजाइन की कि हम क्रॉप कोफिशिएंट जो है वो कैसे डेलीगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट डाटा एंड यूज फॉर द जीएस टेक्निक्स। तो हमने ये फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन जो है ना ये डिजाइन की। एफर मीन फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन, एनडीवीआई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनडीवीआई है, एनडीवीआई वी है आपके पास, एनडीवीआई वैल्यू ऑफ वेजिटेशन, एंड एनडीवीआई एस है एनडीवीआई वैल्यू ऑफ बेयर सॉइल। हमने क्या किया कि अगर हमारे पास वी हैव अ टॉप लेयर ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेजिटेशन इंडेक्स, उससे हमने क्या किया कि एनडीवीआई जो बेयर सॉइल है उससे हमने उसको माइनस कर दिया कि हमारे पास एक्चुअल जो उसकी ग्रीननेस है उस फील्ड की वो बची। साथ में हमने उसको फैक्टर डिवाइड करने के लिए कर दिया कि जो आपके पास प्योर वेजिटेशन की है, पहले एनडीवीआई हमने जनरलाइज ली, उसके अंदर सॉइल भी आ रही थी, क्या है उसमें वाटर की एनडीवीआई भी आ रही थी, किसी भी उसके अंदर वेजिटेटिव कवर की आ रही थी। जब हमने डिवाइड किया तो हमने सॉरी उसमें हमने प्योर वेजिटेटिव कवर जो है वेजिटेशन के लिए उससे भी हमने उसको लेस किया बेयर सॉइल को, और ये फैक्टर हमने डिवाइड किया। उससे हमने क्या निकाला कि हमने सेम ये फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन है और सेम वही चीज है जो आपको क्रॉप कोफिशिएंट मिलता है लिटरेचर से। जो लाइसीमीटर डिवाइस के जरिए आप क्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके आप क्रॉप की स्टेज वाइज कोफिशिएंट डिजाइन करते हैं कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सेम हमने ये जो क्रॉप कोफिशिएंट है वो रिमोट सेंसिंग टेक्निक से जीएस को यूज करते हुए किया। एक्चुअल एवेपोट्रांस, अब हमारे पास नीचे आप फार्मूला देख रहे हैं, एक्चुअल एवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन। कि आपके पास एक्चुअल एवेपोट्रांसपिरेशन मीन है क्रॉप इटी आपके पास आ गई है, तो आपने क्या करना है कि उसकी क्रॉप बिलोंग कर लेंगे। नशा यूज किया, डिफरेंट सीन थे वो हमने डाउनलोड किए, तो उसको हमने प्रोसेस किया। ये एक लंबी बैकएंड पे वो एक इसकी कैलकुलेशन थी, तो इसमें डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, साथ में हमने ये जो हमारे पास क्लाइमेटिक डाटा था उसको जो हमने सारे मैप्स डिजाइन किए, तो इसके अंदर डिफरेंट जो है मिनी सनशाइन या विंड स्पीड्स। ड्यूरिंग दिस वी are not used a simple interpolation method. Basically, we are used in this study for delineation, for preparation of this mapping. We use empirical Bayesian kriging with 100-meter resolution. As I earlier said, we downscaling all the layers onto 100 by 100 meter for the particular, because we are dealing with the spatial location based suitability. So we can dissolve all the layers into 100 by 100 meter. For the validation of this sample data during the interpolation, जो हमने 10% डाटा है वो बीच में हमने डेलिबरेटली बीच में स्किप कर दिया, ताकि हम अपने ही डाटा की क्रॉस वैलिडेशन करेंगे। जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्रोच यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी को हम चेक कर लें। तो उसका हमने बाद में प्लॉट ड्रॉ किया, तो उसके अंदर वो हमारी 90% जो हम एक्यूरेसी वो हमें मिली। अपने ही हमने उसकी डाटे की बेस पे अपना जो स्टैटिस्टिकल मेथड था उसको हमने उसको वैलिडेट किया। स्कैटर प्लॉट जो हमने ड्रॉ किया उससे हमें वो रिजल्ट्स मिले। ये हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया सारे क्लाइमेटिक जो हमारे पैरामीटर्स थी उनके बेस के ऊपर। जो ड्यूरिंग द क्लाइमेटिक डाटा जो हम मैप बनाया, तो डिफरेंट जो रीजन्स थे उनके वो टेम्परेचर्स हैं, वो सारी चीजें वो इधर
हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर लूंगा तो वो मेरे ख्याल आप लोगों तक पहुंच भी जाएगी, तो इसमें हम नहीं जाते। नेक्स्ट हम जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। ये इसी तरह हमने रेनफॉल का जो डाटा है उसको यूज किया ऑन 1985 से, जो भी हमारे पास अवेलेबल था 2017 तक का, वो हमने इसमें यूज किया और उसमें नॉर्मल रेनफॉल को जो हमने किया। इसमें अंदर एक इंडस्ट्रियल स्टडी हमारी जनरेट हुई, वो आपसे मैं शेयर भी कर लेता हूँ। जो हमारा मॉनसून का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट जो हमने इसमें स्टडी की है वो हमारा पेपर पे आ रहा है। जो हमारा पीक मॉनसून है वो हमारा ये, अगर आप यू कैन लुक एट द अपर ऑफ द मैप एंड रावलपिंडी जेलम, अगर इस जगह पर आप अगर देखें तो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल का जो ट्रेंड है हमारे पास वो रावलपिंडी है, कटक के एरियाज के अंदर है, जेलम है, चकवाल में है। लेकिन इन लास्ट 20-25 ईयर्स जो हमारा मानसून का ट्रेंड है उसका जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स वेस्टवर्ड था। वेस्टवर्ड क्या था, वो आपके पास खुशाब मियां वाली बखर की तरफ हमारे जो मानसून सीजन था वो इसका ट्रेंड है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा था। इस स्टडी के दौरान ये एक न्यू फाइंडिंग्स थी जो हमारे लिए आई थी। साथ में हमने एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें यूज की थी कि क्योंकि हम जो अब बेसियन क्रेगिंग स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज कर रहे थे तो उसके अंदर हमने सिंपल जो ब्लाइंड है इंटरप्रिटेशन वो यूज नहीं की थी। तो हमने जब हम अगर टेम्परेचर को इंटरपोलेट कर रहे हैं तो उसमें रेनफॉल को हम उसकी वो इनपुट में रख रहे थे, साथ में हम एलिवेशन फैक्टर दे रहे थे ताकि जो हमारी एक्यूरेसी है इंटरप्रेशन की वो इंश्योर हो कि टोपोग्राफी को हमने उसके अंदर वो इन्वॉल्व किया था। ये पोटेंशियल वेपर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैप है वो जो क्लाइमेटिक डाटा है जो पीएमडी स्टेशन से हमने एक्वायर किया था उसकी बेस पे ये हमने इनाड का जो पेनमैन मॉडिफाइड मेथड है एफएओ का एफएओ 56 के अंदर है उसको हमने यूज किया था। गुड थिंग इज दैट कि जब आप काफी लोगों ने यूज किया होगा कि जो आप लोग यूज करते हैं जब evapotranspiration, when you are calculating evapotranspiration you can use a CropWatt सॉफ्टवेयर। तो CropWatt सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको अगर आपके पास यू हैव 25 स्टेशन डाटा तो आपको 1 by 1 स्टेशन की लोकेशन देकर उसका डाटा एंट्री बीच में करनी पड़ती है मैनुअल। बट इन दिस रिसर्च we developed a software named as a special UAAR special इटिनाड कैलकुलेटर। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को एंगेज किया जो आईटी बेस्ड एक्सपर्ट्स थे, तो हमने CropWatt को जो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, जो उसकी ये इक्वेशन थी उसको हमने एक सॉफ्टवेयर में लेकर गए, ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर हमने उसको बनाया। अब हमें क्या करते हैं कि हम पूरे स्टेशन का डाटा एक एक्सेल शीट में दें या CSV फाइल में दें और इसके अंदर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते हैं आप उस सॉफ्टवेयर में, वो फ्री अवेलेबल है मेरे काफी स्टूडेंट्स के पास भी है, UAAR स्पेशल इटिनाड कैलकुलेटर। आप उसमें फाइल दें तो विद इन नो टाइम आपको वो जो evapotranspiration है वो कैलकुलेट करके वो सॉफ्टवेयर दे देता है। यानी CropWatt में जितना हेक्टिक काम था कि हम मैनुअल डाटा एंट्री करते थे, लोकेशन दी, स्टेशन का नेम दिया, आगे मंथ वाइज आपने उसमें डाटा एंट्री की, तो एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, अगर आपके पास मोर देन 100 स्टेशन हैं तो आपके पास वो काफी टाइम टेकिंग वो प्रोसेस है। लेकिन हमने इसको वो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप इसके अंदर किसी रिसर्च के अंदर हमने किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉइस्चर इंडेक्स हमारी जो पहली थी कि डेलिनेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो हमने थर्नवेट मॉइस्चर इंडेक्स जो है उसको यूज करते हुए precipitation minus evapotranspiration divided by evapotranspiration multiplied by 100, ये एक थर्नवेट का जो था मेथड, हमने उसकी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर हमने उसी को पंजाब के ऊपर अप्लाई किया। तो डिफरेंट जो आपके पास क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हाइपर एरिड, सुपर ह्यूमिड, एरिड, सेमी एरिड, डाइसोमिड, जो हमारे पास क्लासेस आ रही थी उनकी बेसिस के ऊपर वो हमारा जो पंजाब है वो न्यू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो हमारे आइडेंटिफाई हुए। जी आप देख रहे हैं कि आपके पास न्यू जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो आपके पास डेलिनेट हुए हैं और इनकी जो वही हमने कोडिंग रखी है जो थर्नवेट की है।
जो 7 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो पंजाब के अंदर ये डेलिनिएट हुए हैं, दिस इज द लेटेस्ट डाटा के ऊपर रिसर्च हुई है और लेटेस्ट डाटा यूज हुआ है, और जो ऑलरेडी लिटरेचर में चीजें अवेलेबल थी उन्हीं को यूज करते हुए लेटेस्ट डाटा के ऊपर नई टेक्निक जो टूल्स हैं वो यूज हुए हैं उसके अंदर। During this time period, also we notice that there is a negative relationship between लैंड सरफेस टेम्परेचर एंड एनडीवीआई। डेफिनेटली जहाँ पर लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है वो हाई था, वहां पर एनडीवीआई जो लो था, ये एक फाइंडिंग थी बीच में। अब जब हमने पहले बात की कि हम क्रॉप बेस क्रॉप रिक्वायरमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास हमें पता होना चाहिए था कि इस टाइम पंजाब के अंदर कौन सी क्रॉप कहाँ पर लगी हुई है। अगर जब हम वीट पे हम काम कर रहे थे, कॉटन पे काम करते थे, हमें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली लोकेशन इस टाइम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है किसी भी क्रॉप की। हमने पूरे पंजाब पे काम करना था, तो उसके लिए हमने कंप्रिहेंसिव जो मैपिंग है वो कौन सी क्रॉप किस जगह पर ग्रो इस टाइम कर रही है वो हमने इसके अंदर मैप्स बनाए। उसके लिए हमने मोडेस एनडीवीआई प्रोडक्ट यूज की। इसकी ग्लोबल कवरेज है तो इस डाटा को हमने यूज किया, और ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस है वो इसका हम परफॉर्म किया। तो एक गो में मैं आप उसको कर लेता हूँ, लेकिन इसकी जो मैपिंग है वो आगे हम आपको बताता हूँ। ये वाले हमारे पास जो मैप्स है, ऐसे आप बॉटम टू ऊपर जाएं, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है, राइस है, वीट है, और जहां पर आपको ये रेड से बड़े बड़े डार्क वो सिटीज एरियाज हैं, और बाकी आपके पास कौन से पिक्सल के अंदर कितने परसेंट क्रॉप्स हैं वो ग्रो की हुई हैं एग्जैक्ट। इसको हमने फिर ग्राउंड से वैलिडेट भी किया, जो जब हमने ये क्रॉप डिजाइन ये क्रॉप डिजाइन की मैप्स बनाए फ्रैक्शन।
हेलो, आई थिंक अनम्यूट हो गया, अब जो होस्ट की तरफ से था वो डाटा सेंटर की तरफ से। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि एनडीवी फ्रैक्शन वर्सेस क्रॉप कोफिशिएंट। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेजिटेशन फ्रैक्शन है, वो हमारे पास जो सैटेलाइट डाटा से हमने जीएस टेक्निक यूज करते हुए वो हमने ये क्रॉप कोफिशिएंट निकाला, और साथ में क्रॉप कोफिशिएंट जो हमें लिटरेचर से मिलता था वो मिला था। If you can look at the rice crop and you can go on the month of May, 1.9 is the percentage, and satellite data, and 0.2 is on the literature. इसी तरह आप देखेंगे हर मंथ वाइज आप इसका वो कंपैरिजन है, हर क्रॉप का कंपैरिजन है। ऑलमोस्ट हमने ये कोई 56 क्रॉप्स का हमने कंपैरिजन करके इसके अंदर निकाला, और इसी का ऊपर हमने देखा है कि वो आप कोफिशिएंट ड्रॉ किया है। if you can see the first graph of wheat, तो 92% जो है उसका कोरिलेशन डिजाइन हुआ, ड्रॉ हुआ। vegetation fraction calculated from the satellite data, and the crop coefficient was calculated with that some lysimeter device or other literature। तो ये हमारा दोनों का कोफिशिएंट ड्रा हुआ। तो हर क्रॉप को हमने डिजाइन किया, तो हर क्रॉप्स के हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 80% प्लस उसके अंदर आया। किसी में जैसे टमाटो है उसमें 73% आया है, मेज है 81 आया है, कॉटन है वो 80% है, शुगर केन है वो 90% है। इसमें हर क्रॉप्स का हमारा वो बड़ा क्लोज रिजल्ट्स आया। तो इस रिसर्च का ये है कि अगर आपके पास ये क्रॉप कोफिशिएंट है वो लिटरेचर में अवेलेबल है, वो है 2005 की 6 की, अभी आपके पास रीजनल वाइज लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव अ गुड ऑप्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉप कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट डाटा एंड यूज द जीएस टेक्निक्स। बजाय कि आप इतना ओल्ड डाटा यूज करें, तो ऑलमोस्ट 2 डेकेड आपका ओल्ड डाटा है, तो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट, क्रॉपिंग साइकिल चेंज, तो आप उस चीज को बजाय कि आपके पास एक अवेलेबल है कि आप सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें, छोटी सी टेक्निक यूज करके आप डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और उस चीज को यूज करें, तो आपकी जो क्रॉप रिक्वायरमेंट की एफिशिएंसी है इसको आप वो मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट डाटा अवेलेबल होता है। बेसिकली ये हमारे पास बल्कि ये साथ में हमने वो मैप्स जो हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं, ईटीए मैप्स हैं, और पोटेंशियल वेपर ट्रांसमिशन के मैप में एक्चुअल वेपर ट्रांसमिशन के मैप्स हैं इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ये साथ में हमने वो डेली जो एक्चुअल वेपर ट्रांसपिरेशन है वो डिफरेंट क्रॉप्स की वो हमने इसके अंदर जो मिलीमीटर पर मंथ है जो फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेशन से हमने कैलकुलेट की, और साथ में हमने दोनों डाटा सेट्स का जो है वो कोरिलेशन भी ड्रॉ किया। यही है, तो दोनों जो ईटीए थी जो कैलकुलेटेड फ्रॉम सैटेलाइट डाटा और कैलकुलेटेड फ्रॉम हमारे पास जो ग्राउंड डाटा था उसकी बेस के ऊपर हमने दोनों का वैलिडेशन की कि हमारे पास एक्चुअल वेपर ट्रांसपिरेशन जो क्रॉप रिक्वायरमेंट है उसका हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। डिफरेंट क्रॉप्स के रिजल्ट्स जो हैं वो देखें आपके पास वाई एक्सेस पे आपके पास सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट है, और एक्सेस पे आपके पास जो क्लाइमेट डाटा ऑन ग्राउंड वेदर स्टेशन इंस्टॉल है उनका है, जैसे वीट का है, राइस का है, कॉटन है, शुगर केन है और मेज है। ये दोनों का हमने एक वो बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है कि दोनों जो डाटा सेट्स हैं सैटेलाइट डाटा सेट्स हैं, और उसके बाद जो आपके पास ग्राउंड स्टेशन इंस्टॉल हैं उनकी आपके पास क्या है। दोनों की आप बात देख लें कि क्रॉप रिक्वायरमेंट है वो पर क्रॉप वाइज आपके पास कितनी आ रही है। तो बेसिकली ये थी जो हमारा आज के टॉपिक था। मैं इसी तरह इसी जगह पे इसको थोड़ा सा वो लिमिट करूंगा, टाइम भी क्लोज है, और क्योंकि रिसर्च तो हमारी और भी है इसके अंदर, लेकिन टॉपिक पर्टिकुलरली हमारा यहीं तक था। तो कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर कर लूंगा, वो मेरा ख्याल है एडवांस्डली आपसे आगे कर लेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? हेलो जी जी सर। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नाउ it is question and answer session. If you have any question, you can ask your question.
No questions? So that's all. Thank you so very much. I would like to thank all the participants for their participation, and especially Dr. Amin for delivering a very informative lecture on the subject. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you.